I'm Dr. Jamuna Pai, your official skincare expert for Oxy Bleach Pure Model, India's International Face 2010. Hi, Megha. Please come sit down. उन्होंने हर एक जन को, हर एक कंटेस्टेंट को 1-on-1 प्रेस्क्रिप्शन भी दिया कि तुम ये करना बिकॉज हर एक की स्किन अलग है. So I think all in all, it's a good batch from a skin point of view, and I wish them all the very great luck. मिस वीना ने हमारा सेशन लिया था ऑक्सी ब्लीच का, which was very informative. उन्होंने हमारे को बताया कि ऑक्सीजन is really important for our skin. It helps us to breathe. Skin care regimen, that is CTMS, that is cleansing, toning, moisturizing and SPF. जब मैं उनसे मिली तो बहुत अच्छा लगा और पता चला कि हम इंटरनेशनली अपने इन इंडियन फेसेस को प्रेजेंट करने के काबिल हैं. If you see that how you have to use on your face, I'll be showing you the demo. We saw the changes in front of us, जो काफ़ी अच्छा था, and the belief in the product is even more now. ऑक्सी बीच सेशन के बाद हमारा नेक्स्ट सेशन था जो कि एक मॉडल की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, वो है एटिकेट सेशन. My name is Rukhshana Isa. I'm the official grooming and etiquette expert for Oxy Bleach Pure Model, India's International Face of 2010. I've been training all the Miss India girls from 2001 to 2010. This is a very important part of the session. It's how to behave, how to conduct yourself when you're in any situation, any environment. We're going to now talk about going to an event. It's an official party. How would you dress for this occasion? So if it's a night party, I would rather like to dress up in red or black. If it's official, I would like to dress myself in a proper suit. Okay. The invite is for 9 o'clock. What time should you arrive there? I would reach there by 5 minutes to 9. In a party, you have a little leeway to be late. Between 9 and 9:30 should be pretty good. How would you introduce yourself? My identity and your identity. उन्होंने बताया कि किस तरह से आप जब पहली बार किसी से मिलते हो तो किस तरह से आपको हैंडशेक करना चाहिए, किस तरह से उनसे बात करनी चाहिए, किस तरह से बैठना चाहिए. Do you ever get drunk at a party? Never. Never? When a girl gets drunk, she's, you know what? When a boy gets drunk, he's pleasantly high. Okay, so ladies, no getting drunk ever. Anything you want to ask me? Yes, please. मेरे फ्रेंड्स को ऐसा लगता है कि मेरे अंदर एरोगेंट है, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूँ, तो मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूँ? Be nice to them, no? Be humble. अगर वो मेरे से अलग होना चाहे तो फिर भी मैं क्या करूँ? But that's their problem. You behave nicely with them, then what else can you do? तो वही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि मैं एक्सप्लेन कैसे करूँ उन लोगों को कि वो मेरे को गलत ना समझें और मेरी बात को फॉलो करें, लेकिन मैं ऐसा हूँ, मैं ठीक हूँ. आंसर ऑफ हिज क्वेश्चन. अभी ये जो बोल रहा था, इसने कहा कि मैं फ्रेंड्स को कन्विंस करता हूँ ताकि वो मुझे फॉलो करें. वो फॉलो करना नहीं चाहते. You can give them guidance and it's up to them that they follow. You can't say follow me. Exactly. To move together rather than following each other. That's why इसके friend नहीं बनते. Okay. Thank you all very much. Enjoy your evening and I'll see you all again.